हिमांशु जी ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ GTA ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸੋਗਮਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਣ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸਕੀਏ। We are here for Dr. Manmohan Singh. He is the, in my opinion, he is the number one, is the best Prime Minister of India. Whatever he started from 1991 until there, now India is on top of every country. That is because of all his policy. Whatever he started, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की तमाम चीज़ें जो इवन के भारत के तमाम धर्म के लोगों को इकट्ठा करना, that was the Manmohan Singh work. And we never got any prime minister like him. And thank you very much everybody to come and we'll pray for him. Thanks a lot. Subhash. मनमोहन सिंह दुनिया में एक ऐसे पॉलिटिशियन थे कि जिन्होंने अपनी पावर्स का, अपने ऑफिस का मिसयूज नहीं किया। नहीं तो दुनिया में हर पॉलिटिशियन ने किसी न किसी एंगल पे, बड़े पर, छोटे पर, टाइम पर और किसी भी उस पर अपनी पावर्स का किसी कम्युनिटी, किसी पर्सन, किसी उसके अगेंस्ट मिसयूज जरूर किया है। बट he was the only person in the world history till date who have not used his powers, his office against any person, against any country, against any community. So that's why I can say he was the greatest person born on this earth so far, from my opinion. Thank you. Prime Minister जो कि सानू विदाई दे गए ने मनमोहन सिंह जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਔਰ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, RTI ਵਗੈਰਾ ਵਰਗਾ, ਐਂਡ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਔਰ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत सी जिन्हों का कि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई होर पैदल है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिहड़े वाज जिन्होंने इंटैग्रिटी, उन्होंने हार्ड वर्क, डेडिकेशन, देशभक्ति वाज अनपैदल। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने देश को एक टोटल टर्न अराउंड किया। मेरी अपील होगी कि गवर्नमेंट एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट की ऐसे बंदे ने भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। ही वाज इज ट्रूली डिजर्विंग, ऐसा बंदा जो ट्रूली डिजर्विंग है। हालांकि कदे ही वाज नेवर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लोकसभा, बट
फिर भी मतलब उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर एक कोलिशन गवर्नमेंट ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ which shows ਕਿ ਕਿੰਨਾ effective and ਕਿੰਨਾ intelligent man ਸੀ, ਕਿੰਨਾ effective ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਲਿਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ it's a big challenge because everybody has own ideologies, right? And everybody tries to pull the government apart and for their vested interests or but this man had the guts and the vision and the dedication to get these things done. It's awesome. Amazing. So blessed to be. Thank you. Yeah, हम सबके पहले डॉक्टर सिंह से हमारी डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं, तो हमने कहा इस वक्त just something I remember. We have two very close family friends. One of them who was with him in his Oxford Cambridge days, and from all those times they've been friends with him for the last, I don't know, 60, 70, 80 years. And the gentleman, he passed away a few years ago, and the lady is still here in Toronto, but she's not well. She got a call only 2 days ago from Shradhanjali telling her about the demise of her husband. And all accounts, he was a gentle person. I mean, they knew him from 70 years. I never met him. I did have Very impressed by जो कुछ like his achievement 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ when India was in such a bad situation they like almost the gold had to be I'm sure a lot of people must be remembering gold just here they had to be put down to as a mortgage for the foreign exchange reserves were so tight here it was absolute total crisis so he was a man who Narasimha Rao like chose as a finance minister and he turned things around. 1990, we got freedom in 1947, but 1991 we got economic freedom. And it was from Manmohan Singh's side. And I still remember Manmohan Singh's speech in budget. That's the only budget, first budget I saw on television. And he remembered, it's a quote from a great British writer. Like it says, when time has come, like it is things he cannot stop anyone whose time has come. So no force can stop the event. So Manmohan Singh was like that kind of a person whose time had come and the economic freedom of India had come. So Manmohan Singh was the event through that, right? Manmohan Singh he was born in Gaha, Pakistan, Punjab, which is part of Pakistan, and then he rose to become such a respected leader and one of the top economists in the world. He had an education from Punjab University, then Cambridge, then Oxford. His contributions towards India's economic development is unparalleled. His contributions towards security of India and the bringing a rural development of India was unparalleled. In 1991, his vision and courage did a groundbreaking work in lifting millions from the economic poverty and setting India on a global path of economic growth and progress. In 2004, Manmohan Singh became the 13th Prime Minister of India and he served 2 terms. They were marked by significant progress and stability in the country, but whole of subcontinent. And he was really very good in BRICS and towards the whole. And he was one of the few prime ministers who was appreciated by the president of the United States, 2 presidents, both by George Bush and by Barack Obama. George Bush. All people know what Barack Obama said about him, but few people know what George Bush said about him. When he was invited to his White House and he was going back home, and George Bush came out to Secretary of Indian Ambassador to the United States. He told Indian Ambassador, he put his hand around, he said, "Don't take care of Manmohan Singh. He's a good friend of mine." So this is the kind of respect that man had. This is the kind of things which he did. But he was not born in a political family or with silver spoon. This was his work which reflected, right? And his outstanding work, what he did. His humility, his intellectual vigor, and his strength. He was called in Manmohan Singh, right? Like he was kind of more, like he's very silent, doesn't speak too much, right? But his work and the way he handled things was outstanding, right? Like when you look at it, he was never elected as a member of Lok Sabha. Anybody could have become the Prime Minister. Sonia Gandhi could have chosen 15 other people.
was something in this man which he became the prime minister. We have to. He was not a politician. Never was, and never till the end never was. Like he was, but he did something great. That's why he was chosen to become the prime to lead the country, and he did it so well. It's outstanding. I still remember the civil nuclear deal which they had in the United States. At that point of time, the government nearly collapsed, and they said the left wings said we'll pass a no confidence motion. He said, doesn't matter, let them decide whatever they want to decide. We will go ahead with the deal. And he not only did he survive, but from that point of view, like the left parties started going down. So this is the man's courage. Like, this is the man's guts, right? And we cannot forget his act. Like, he brought in Aadhaar card, he brought in the Right to Information Act. After Right to Information Act, things became so open, right? Because we could ask what was happening. Before that, the officer would say, it's confidential and file would go away. But this man brought that thing up, and like, it changed the whole thing, right? And we often talk about the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was a landmark. It was a historic day. It guarantees employment to rural families. A lot of people actually rose up from poverty because of this thing, what he did, right? Not only, and even Aadhaar card, nobody could vision that this thing could be done, but this man did that, right? And he wasn't a minority government. He never had a majority government. And getting everybody together in a minority government to get such historic things done shows leadership, shows vision. People will not follow you. Like, it's so easy to break apart, but to get people to get together and for 2 terms is an instrument in itself. It's kind of historic thing. His legacy extends beyond India's border. As a statesman, he was well respected the world wide over. And throughout his life, Manmohan Singh was a model of integrity and humility. One of the humblest prime ministers. Even any reporter could ask anything to him and he would answer. He never shied away from questions, even if the questions were like, at one point of time, because of Right to Information Act, his government got into a lot of trouble because there were people who were doing corruption. They were asking him, and he did not shy away. He actually faced them. He faced the media, and he answered the questions. His quiet determination combined with his unparalleled expertise left an undeniable mark in India's history. As we bid farewell to this remarkable man, let us remember Dr. Manmohan Singh was not just for his achievements, but for the values he brought in, the values he embodied: wisdom, compassion, and unwavering dedication to his country. His life was testament of the power and intellect and character, and his legacy, which will continue to inspire generations to come. Personally, I have really been inspired by this man, and when he became the finance minister, at that point of time, I was very young, and it was really inspiring. When he became the prime minister, it was more inspiring. And every time, he has really inspired the youth and has been an instrumental in creating an economy which is from a very poor country to an economy which the world today looks up to and respects. Thank you very much. We have somebody to pay homage to our beloved ex-Prime Minister of India, और इसके लिए मैं एक बार फिर से नारंग जी का धन्यवाद करता हूँ जो इस काम के लिए इन्होंने सब लोगों को इनवाइट किया और हमारे बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर को होमेज देने के लिए हम इकट्ठा किए। तो जैसे कि निरंकार स्वरूप हम ये मानते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, उसी को मैं मानने वाला हूँ और उसी के लहजे में मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑफिस देने जा रहा हूँ। जैसे एक मंगलाचरण की एक छोटी सी 2 लाइनें हैं। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का तू सबका आधार। ये लाइनें इसी के ऊपर आधारित है कि वो इस जो निराकार है वो सारी सृष्टि का वो ही जननी है,
वही उसको पालने वाला है, वही उसको चलाने वाला है। तो ये जो दिवंगत आत्मा है, जो इनके काम हैं, जो इन्होंने भारतवर्ष के लिए किया है, वो तो हम खैर भूल नहीं पाएंगे। कहने वाले ये भी कहते हैं, कभी आज के बाद 10, 20, 25 साल के बाद जो इतिहास आज लिखा जा रहा है, जब उसको हमारे बच्चे, जब जो हमारी कमिंग जनरेशन्स हैं वो पढ़ेंगी, तो तब ये रियलाइज करेगी कि व्हाट वाज मिस्टर मनमोहन सिंह, वो क्या शख्सियत थे। और मैं इसका छोटा सा अपनी जो ट्रिब्यूट देने जा रहा हूँ, उसी के चलते मैं 2 लाइनें उसके शख्सियत के ऊपर बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, वो पवित्र धरती है, तो ये वहीं के रहने वाले हैं। जब लाहौर से पार्टीशन के बाद आए तो ये अमृतसर में आके बसे, और जहाँ पे मेरा पेरेंटल हाउस है उसी के पास इनका एक पेट्रोल पंप है जो इनके भाई साहब चला रहे हैं। रंजीत एवेन्यू में अभी आज के दिन में रह रहे हैं। और इतने नाइस और इतने जेनरस थे वो कि कभी उन्होंने किसी के लिए ना तो सिफारिश की कि मेरे भाई को ऐसा किया, मैं प्राइम मिनिस्टरों को भाई के लिए ऐसा कर दूँ या वैसा कर। एक तो उनकी जनरसिटी का ये एग्जाम्पल था। उन्होंने खुद अपने हिसाब से जो पंजाब गवर्नमेंट में जो किया, जो सेंटर से लिया पेट्रोल पंप एक, अब जाके लिया है कुछ दिन पहले। दूसरा, क्योंकि वहाँ पे ये हिंदू सभा कॉलेज है एक, जैसे वो बड़ी संस्थाओं में है, जो एक हिंदू सभा कॉलेज है, वो ये भी संस्था है, ठीक है। ये सनातनी हम लोग मानते हैं, तो हम लोग भी वहीं के पढ़े। मैं डीएवी का पढ़ा हूँ, वो हिंदू सभा कॉलेज के पढ़े हुए थे। तो जब मैं एक बार एडमिशन लेने के लिए, जब मैं आई वॉज स्टूडेंट इन कॉलेज, तो मैंने एडमिशन के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ लेके गए कि आपको यहाँ दाखिला दिलवाते हैं। तो जब मैं वहाँ जाके मैंने देखा मेरिटोरियस स्टूडेंट की लिस्ट लगी हुई है। तो आज से कितने वर्ष पहले ये गोल्ड मेडलिस्ट थे, तब के इकोनॉमिक्स के ये छात्र थे और गोल्ड मेडलिस्ट थे, और इसकी वहाँ पे पिक्चर अभी भी डली हुई है। और उसके ऊपर जो हिंदू सभा संस्था है आज भी फख्र महसूस करती है कि ये जीनियस पर्सनैलिटी था जो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट रहा है। और इससे एक इनकी जनरसिटी, इनके पिताजी को भी बताता, कोहली फैमिली से ये संबंधित है। क्योंकि मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर अभी किया हूँ, तो हमारे बैंक में एक मर्ज बैंक हुआ था। जैसे अमलगामेशन का दौर चल रहा है, तो एक हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक था, वो हमने टेक ओवर किया जब, तो इनके पिताजी का अकाउंट उस बैंक में था। इनके पिताजी का अकाउंट हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक में था। जो मेरे जानकार एक मेरे दोस्त है, वो उसके पिताजी हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक में लगे हुए थे। जब एट दैट टाइम व्हेन ही वाज फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसने 1 रुपए के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी सिर्फ साइन करता है। जब इसने मनमोहन सिंह के साइन किए और वो नोट आए, 1 रुपए का नोट होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो प्रॉपर्टी है। देन आफ्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो 1 रुपए के नोट की कॉपी लेके आए, और उस व्यक्ति को, मेहरा जी हैं वो मेरे दोस्त के पिताजी, उसको उन्होंने ये कॉपी दी। कहता मेहरा जी, पंजाबी से बोलिए जी, मैं कुछ पंजाबी में भी बोल दूँ, तो उन्होंने कहा कि मेहरा जी, कहते हाँ, कहता आपके पुत्र ने ना आज पहली बार हिंदुस्तान की करेंसी के ऊपर साइन की है, और ये आपको मैं एज ए गिफ्ट देने जा रहा हूँ। वो एक की कॉपी, वो मर चुके हैं, आज भी वो 1 रुपए की जो पहले उन्होंने साइन किए थे, आज भी संभाल के उनके पास पड़ी हुई है। वो लड़का रानी के बाग में रह रहा है वो, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको भी हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक में अपने बेटे को भी लगवा लिया, प्राइवेट। देन दैट बैंक वाज प्राइवेट बैंक। तो वो टेक ओवर किया तो पीएनबी में आ गया, तो मैं पीएनबी का था, तो मेरा दोस्त वो बन गया, वो लड़का। तो ऐसे करके उन्होंने बताया कि इनकी अच्छाइयाँ इतनी थी, वो आज तक पड़ी हुई है, और मैं कह नहीं सकता। इसके अलावा मैं और ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि यही मैं कहूँगा कि परमात्मा इनकी आत्मा को शांति दे, वो परमपिता अपने चरणों में इनका वास रखे। इन्हीं के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, और नारायण जी आपका एक बार फिर से ये अच्छे कार्य करें।